इनवाइट करना चाहूंगी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी मिस्टर आयुष बैद के साथ में. Request you sir, please join us on the stage. Next I would like to invite on the stage Mr. Nakul Kumawat, Business Head, NutriOrg. Next I would like to invite on the stage Mr. Nitin Jain. Next I would like to invite Mr. Samad Sahani, AVP E-Commerce, Jaipur. Next our request moderator Mr. Mohammed Mubashir, Associate Director, SMB Seats and Partnership. I request you sir, please join us on the stage. So this session we are going to talk about the entire O2, right? Omni-channel experience, offline to online and online to offline. There have been a significant war, there have been a significant debate which is happening these days, whether we should go online first or offline first, right? So this is a quite debatable topic. Let me have a complete pointers coming in from our esteemed panelists upon the same. So first I would like to request the panelists to give a quick, very brief, very quick introduction about themselves, what they are and what they are doing, right? And maybe they can talk about some success stories, or if they would like to share something with us which is going to really add value. So feel free. So we can start from sir. Hi, I'm Ayush. I'm the founder of this brand called Elementary. Elementary is a home and a lifestyle brand dealing with handcrafted homegrown products, imbibed with culture with a core promise to make every day beautiful. We deal in multiple categories like kitchenware, serveware, dinnerware, gifting, etc. So, मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि Elementary is the first Indian brand which directly comes from a manufacturer to the customer in this niche of kitchenware, serveware, dinnerware. So, मेरे जो father साहब हैं वो इंडिया के one of the largest handicraft exporters हैं. And since last 32 years we have been white labeling and supplying to brands like Ralph Lauren Home, Zara Home, H&M Home, Crate and Barrel, Anthropologie, Toshiba, Williams Sonoma, Debenhams. So मैं एक data analyst हूँ and मैंने सोचा कि why not अपन जो चीज़ export कर रहे हैं वो इंडिया में अपन sell करना start करें. And मुझे realize हुआ कि इंडिया एक legit सोने की चिड़िया है. If we are able to tap it correctly, अपन को भी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है. So today, creating Elementary, I've got 20 stores across India. And very recently we got the award for the best home decor brand in the country by Leaders of Tomorrow. So this is my introduction to what I've done. Thank you. Nakul. My name is Nakul. I am from YouTube. YouTube is the leading wellness brand which has the range of wellness products we grow organically in Company, where we grow most of the herbs from material like amla, aloe vera, and many more Indian medicinal drugs. So we are available pan India by BT and modern trade. We are available more than 85 plus markets. We do export more than 80 countries. We are the largest cultivator, manufacturer and processor for herbal ayurvedic usage and organic. Thank you, sir. I would request Nitin ji to speak few words. देखिए लास्ट सेशन है, सुबह से लेकर शाम हो गई है. हम लोग भी वी आर ऑल्सो एट द एज कि हम भी चाहते हैं सेशन अच्छे से रहे, क्योंकि हम लोग भी वो पेशेंस रख के बैठे हुए हैं. सपोजिटिवली तो अगर 5:50 हमारा सेशन खत्म होना था तो वी शुड हैव गॉन फ्रॉम हियर. तो अगर हम यहाँ पे हैं तो केवल इसलिए कि जो लोग यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं वो इस पूरे सेशन को तरीके से जो भी हम लोग एटलीस्ट अपना एक्सपीरियंस या नॉलेज आपके साथ में शेयर कर सकते हैं वो कर पाए. तो मैं सिंसियरली रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग इस सेशन में इंटरेस्टेड है वो रुके, और जो नहीं है जिनको घर जाना है, बात करनी है, वीडियो कॉल करें, प्लीज करें. एटलीस्ट इट विल हेल्प अस टू बी मोर फोकस्ड फॉर पीपल हु जेन्युइनली हियर टू लर्न एनीथिंग अबाउट O2O, जो भी थोड़ा बहुत हम जानते हैं. वैसे तो सबको सब कुछ आता है, बट जो थोड़ा बहुत हम जानते हैं उसके बारे में अगर हम चाहें कि खुल के थोड़ी सी बात हो पाए तो प्लीज वही लोग रुके जो इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे बैठे हैं और कॉल्स पे बात कर रहे हैं वो बहुत डिस्ट्रैक्ट है. अबाउट मी, मैं
इसी तरीके से काम करता हूँ और मैं इसी तरीके से बात करता हूँ जो टू द पॉइंट होता है. I drive a brand called Indie Gifts. Indie Gifts के अंदर we are genuinely, sincerely trying to create some indigenous products. और indigenous का मतलब है कि there are already इतने सारे products हैं, लेकिन उनमें innovation quotient को add करें, तो उसी तरीके से हम काम करते हैं. We take inspiration from the art and craft of this rich country and innovate it to make it usable for Gen Z or the whatever TG we are talking about. तो काफी सारे छोटे छोटे अफोर्डेबल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं और वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स इंडियन ओकेजन्स एंड रिलेशंस. हम इंटरनेशनल मार्केट में नहीं काम करते और ओमनी चैनल एक्सपैंड करते हैं. तो देयर वी हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग्स व्हिच डेफिनेटली आई कैन शेयर विद यू, बट व्हाट वी डू इज प्योरली मेक पीपल हैप्पी बाय सम डिलाइटफुल गिफ्ट्स. दैट्स व्हाट आई डू. Thank you, Nitin ji. Would like to give this opportunity to Mr. Samarji so that he can share something about. Yeah, hi guys, my name is Samar, and I have been given an opportunity to work with fairly a big offline brand which is Jaipur Rugs. Jaipur Rugs is near about a 45-year-old company, and we are embracing online and offline like crazy. I would love to give some information which I have, but yes, it's been a fabulous journey so far with Jaipur Rugs. Right, we are present not only in India but also in US, Milan. We are also there in Singapore. We are also there in London. So the opportunity is really, really big. We are in Dubai. Russia, we don't have an offline presence, but yeah, we are thinking about it. So yes, it's going really, really great for us, and I think we are truly making India come out on the global stage, and I have been blessed to be given that opportunity. Thank you, sir. So, a quick session brief. The panel will emphasize on the importance of creating a cohesive customer experience that bridges the physical and digital channel, and how business can optimize their reach and engage by leveraging online to offline and offline to online excellence, ensuring seamless growth across all platforms. It will also focus on the strategies that use personalized marketing to boost customer loyalty and increase sales. My first question, I would like to pose the first question to Mr. Ayush ji. Ayush ji, just wanted to have some clarity around, how customer experience is important and what right parameters or right measures should be taken, in building top brands these days. In terms of maybe if you want to prioritize on the basis of few parameters, then what that parameters are going to be. I feel customer experience is one of the key elements towards driving your growth and success, of course. In my experience, there are multiple ways to drive customer experience or to enhance customer experience. For example, the most important is personalization. Whether we are into a product business or a services business, I think personalization जहाँ आ जाता है ना, that is the game changer. जितना अपना audience personalization से connect कर पाता है, I think that is the best thing, and my suggestion would be to go for personalization. Other than personalization, omni-channel is the next big thing. So omni-channel is a business strategy that aims to provide a seamless experience across the channels, whether online or offline, irrespective of the fact how the customer wants to engage with your particular brand. तो मुझे लगता है कि omni channel is the next big thing जिस पे अपन लोग को फोकस करना है. एंड मैं एक और चीज बोलूँगा इसमें कि एक फैक्ट बताता हूँ. According to Nielsen's hypermarket consumer business theory, a shopper on an average goes out 11 times in a month to shop, and a loyal customer purchases twice out of those 11 instances from a particular brand, जिसके towards customer loyal है, and the rest 9 times the share of the wallet goes to a similar brand offering a similar product. So for us retailers, our ambition should be to be able to tap into those 9 instances where the customer is going somewhere else, and I think वो possible है through omni-channel. Correct. So personalization, omni-channel,
employee empowerment is something. हेलो, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इज समथिंग कि अगर अपन अपने सेल्स स्टाफ का स्किल सेट बढ़ाएंगे और उनको इतना एम्पावर कर देंगे कि उनको छोटी छोटी चीजों के लिए टॉप मैनेजमेंट के पास ना जाना पड़े, आई थिंक वो भी बहुत कस्टमर एक्सपीरियंस को हेल्प करता है. एंड ऑफ कोर्स वी शुड डू आवर बिट टू इंक्रीज लॉयल्टी, लाइक थ्रू लॉयल्टी प्रोग्राम्स, या अपन ने उन्हें कुछ पॉइंट्स दे दिए. आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें ना कस्टमर एक्सपीरियंस को बहुत एनहांस करती हैं. बट अदर देन दीस बेसिक थिंग्स वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ दैट वी आर कम्युनिकेटिंग क्लियरली. हमारे पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रिटर्न पॉलिसीज बहुत क्लियरली डिफाइंड है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. वंस द रेजोल्यूशन हैज बीन गिवन, फॉलो अप ढंग से हो. वी शुड मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. आई थिंक CRM, there are multiple tools like Zoho and everything. अगर अपन उनको ढंग से यूज करें करके कस्टमर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आई थिंक कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो सकता है इन माय एक्सपीरियंस. Thank you. My next question is to Mr. Nakul. With the growing importance of nutritional diet in our lives, how do we cater to the rising consumer expectations these days? Because there have been a lot more brands which are budding up. There have been well-established brands around. And then it is going to be really very tough for a new, a brand to compete with the existing ones and the budding up ones, and specifically which are, adding some flavors, some new thing which is coming up, right? So it's very difficult for us to compete with them in creating a strong brand. See, if we go with Indian tradition over 5,000 years, it's all about food and see. We all believe to drink clean water, right? And we know the challenges if we drink polluted water. We all believe to breathing in the clean and fresh air, and we know the challenges if we breathing in the polluted air, right? So organic is nothing; it's just a clean, avoiding any insecticide, pesticide, product which is cultivated through holistic agriculture practice. So holistic agriculture practice is the cultivated products should be with biodiversity, focusing on soil health, chemical free, as well as social responsibility. So there are 37 trillion cells in our body. 37 trillion cells in the human body. So these cells need right nutrition, and we all eating food just for our tongue. हमें सबको tasty चाहिए. So these cells require micronutrients like carbohydrate, protein, and the micronutrients like vitamins, minerals, water, and right. So we all know Indian legacy. Indian legacy is food is our best medicine. And what we have done with our food, we almost killed our food. Even a product like turmeric is not available in pure form. The country can have pure turmeric and given to every household. Even 250 grams of turmeric, pure turmeric given to every household. The 90 to 95% cancer issues which we have in the country will not be. So what I am talking about here, friends, I am talking about the opportunity which we have in very big way. I am talking about here, and very interesting part. This is not required the much investment. What is required is passion. What is required is commitment. So now the scenario. Now the scenario has changed. What I personally changed. Customers are now ready to manufacture. So holistic agriculture practice is the cultivated product should be with biodiversity, focusing on soil health, chemical free, and as well as social responsibility. So there are 37 trillion cells in our body. 37 trillion cells in the human body. So these cells need right nutrition, and we all eating food just for our tongue. हमें सबको tasty चाहिए. So these cells require micronutrients
like carbohydrate, protein, and the micronutrients like vitamins, minerals, and water for hydration. Right? So we all know Indian legacy. Indian legacy is food is our best medicine. And what we have done with our food, we almost killed our food. Even a product like turmeric is not available in pure form. The country can have pure turmeric and given to every household. Even 250 grams of turmeric, pure turmeric given to every household. The 90 to 95% cancer issues which we have in the country will not be. So what I am talking about here, friends, I am talking about the opportunity which we have in very big way. I am talking about here, and very interesting part, this is not required that much investment. What is required is passion. What is required is commitment. So now the scenario. So now the scenario has changed. What I personally feel, customers are now ready. We are having our own market where we grow most of the herbs, raw material, fresh food, like such as amla, aloe vera, ashwagandha, chatraudi, and many more Indian grown drugs organically. So all these products have providing best nutrition, providing the nutrient to human body, right? So the right nutrition is very important for us, and we all should know where the product coming from, how it's cultivated. These all aspects we very much required. I second that. Certainly with you there. Because everything is coming to Ayurveda back to olden days, right? Yes. Back to golden days, I would say. And the only challenges we have been, very significant brands who have been the market leaders like Patanjali per se, or maybe like Himalayan per se. And then we have got other brands coming up like Ayush Sudra, Ayurveda, and many more, right? So it is very tough and very quite competitive market. So how you are going to ensure that yes, and everybody communicating the same value. Yeah, ये बिल्कुल fresh है, authentic है, genuine है, right quality है, right quantity है, सब कुछ बढ़िया है. लेकिन आपको ना एक unique proposition बना के और उसको pitch करना कितना difficult है. Specifically when you have got larger, humongous, I would say, order receiving brands like Hamdard, maybe per se, like Patanjali and all. So how tough it is? मैं समझा। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें उस प्रोडक्ट पे हमने क्या R&D की। लाइक हमारे से पहले भी अश्वगंधा बहुत सारी वेलनेस कंपनीज सेल कर रही थी। So what we see, हमने सर्वे कराया, अभी करंटली हम जिनको 20-25,000 कस्टमर्स को हैंडल करते हैं। तो 1000 कस्टमर्स में हमने सर्वे कराया, तो उनका ये पॉइंट था कि प्रोडक्ट असर नहीं कर रहा है। तो हमने उसको फिर पूरा स्टडी किया। मार्केट में क्या होता है कि अश्वगंधा का रूट, स्टेम, लीफ सभी को मिक्स करके ड्राई करके उसको पाउडर और एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस वजह से बहुत असर नहीं कर रहा है। प्रोडक्ट हैज टू बी पर्पस ड्रिवन, यानी उस प्रोडक्ट को लेने पे हमारा उसका पर्पस रिजॉल्व हो रहा है, तभी आप वेलनेस इंडस्ट्री को सर्वाइव कर सकते हो। अदरवाइज पार्टी ए मैन्युफैक्चर बाय पार्टी बी, उसका वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं। आपने रूट्स में कितना उसका मेहनत किया है, कल्टीवेशन में कितना मेहनत किया है, वो कल्टीवेशन है जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से हुआ है नहीं हुआ है, वो सारी उसमें डिपेंड करती है। अश्वगंधा में भी हमने देखा कि अश्वगंधा में जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उसका मिक्स है, वो उसके रूट्स में होता है, और रूट्स में भी उसके मिडिल पार्ट में। तो जब हमने उसका रूट्स का पाउडर मार्केट में दिया और जब हमने कस्टमर के फीडबैक टेस्टिमोनियल्स आए, तो हमने ये देखा कि वो उनके लिए असर कर रहा है, उनका मेनली पर्पस रिजॉल्व हो रहा है। तो जो भी नई ब्रांड्स हैं, they have to be very R&D focused, quality driven, then only they can survive. Thank you, sir. Thank you for this insight inputs. Quickly, let me move on to Nitinji. Nitinji, Indigift is known for its unique gifting value proposition, right? How it motivated you to start this journey, and then when, at what point you decided, okay, this is the right time for me to jump onto the omni-channel? What made me start Indigift, तो because like I'm working from 2008, तो एक
रिसेंटली लार्ज टाइम के अंदर मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर लिए थे। तो और सर्विस इंडस्ट्री में काम करने का फायदा है कि क्लाइंट के पैसे के ऊपर आपको समझ में आता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। So I think service always helps to get more exposure that what is scalable and what is not. So I work with 200, 300 plus clients, brand, businesses, individuals, celebrities, public figures. सब तरीके का काम किया मैंने। तो 7-8 साल काम करके एटलीस्ट इतना समझ में आ गया था कि स्केलेबिलिटी के लिए प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जाना बहुत जरूरी है। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है। तो प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर जिनकी क्लाइंट्स के लिए काम किया था, आई रियलाइज कि प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर इंडिया के अंदर एंड दैट टू व्हेन वी टॉक अबाउट द फेस्टिवल स्पेस बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है और बहुत ही कमोडिटी ओरिएंटेड बिजनेस है। तो आज भी अगर हम बात करें राखी की, तो राखी इंडिया में 4000 करोड़ का मार्केट है। लगभग 50 करोड़ राखी का हर साल का कंजम्पशन है। एक भी राखी का ब्रांड आपको ब्रांड तो नहीं। और ऐसा भी नहीं था कि जो भी हम कर रहे थे, we really wanted to go into the commodity space. We valued relation because that was part of our upbringing culture. And every single product which we design at Indicus is designed, not copied, not sourced, not resale. So in that case, we already have a very strong system where we are not just making products but also having the right research about the future trends, about the changing traditions and blending trends with it. तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स के अंदर हम एक वैल्यू सिस्टम रखते हैं कि उसमें स्वैग भी और संस्कार भी। तो ऑल द प्रोडक्ट्स व्हिच वी आर मेकिंग आर प्योरली वैल्यू ड्रिवन प्रोडक्ट्स, और उसके अंदर भी जितने भी प्रोडक्ट प्राइमरी बने वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बने। जैसे एक प्रोडक्ट है हम लोगों का, वी क्रिएटेड दैट प्रोडक्ट लाइक इन 2016-17, तो मम्मी दा ढाबा। तो दैट्स अ वेरी सिंपल किचन डोर साइन। एक डोर साइन है लगभग 300-400 रुपए का आता है, जिसमें लिखा हुआ मम्मी दा ढाबा 24/7 होगा। दे आर मोर देन लाइक 4-5 लाख यूनिट्स उसकी हमने सेल कर दी, और अभी भी इट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट सेलर एट Amazon इन द हैंडीज। तो अगर हम देखेंगे ना, थोड़ा सिंप्लीफाइड चीजें चाहिए होती है लोगों को, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होनी चाहिए होती है। सिंपल थिंग्स व्हिच इनेबल पीपल टू एक्सप्रेस व्हाट दे फील। आप Amazon पे भी जाएंगे तो Amazon के अंदर आपको कैटेगरीज मिलेगी कि यू कैन कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, चाहे वो अपैरल हो, चाहे फुटवेयर हो, प्राइस वाइज फिल्टर लगा सकते हैं। लेकिन इमोशन वाइज किसी ने कभी सोचा नहीं कि कोई फिल्टर भी हो सकता है। So I think there we hold a strong command because Indian ecosystem, and that too in terms of gifting, is very emotional driven space. People want to express their emotion, and all the products we have are primarily categorized based on emotions and opinions. Second, where we thought to go into omni-channel space. तो omni-channel की अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो ट्रेंड है ना वो बहुत फास्ट बदल रहा है। 5 साल पहले किसी ने क्विक कॉमर्स वर्ड नहीं सुना था, 10 साल पहले किसी ने ई कॉमर्स वर्ड नहीं सुना था। एक टाइम पे जनरल ट्रेड चलता था, फिर मॉडर्न ट्रेड है, अब हम ओमनी ट्रेड पे बात कर रहे हैं। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट ओमनी ट्रेड, वी आर टॉकिंग अबाउट ओमनी ट्रेड। कि कैसे हम एक सीमलेस फोटो सिस्टम बना सकते हैं आज के जो कस्टमर की डिमांड है उसके लिए। जो 2000 में पैदा हुआ है बच्चा, वो 24 साल का हो गया, दैट पर्सन इज बिकमिंग सफिशिएंट कि वो अपने सारे एक्सपेंसेस खुद निकाल सकता है। उसका जो चीजों को खरीदने या परसीव करने का तरीका है ना, वो बहुत चेंज हो गया है। तो मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो डिजिटल फर्स्ट येट गिविंग दैट एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ रिटेल वेयर टच फील एक्सपीरियंस कैन हैपन, वो वाली जनरेशन है। आज भी अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो आई थिंक टोटल क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स मिला के मिला तो 7 से 8% पूरी इकोनॉमी का कवर करता है, क्योंकि कस्टमर फोकस्ड इकोनॉमी है। 92% इज स्टिल इन रिटेल एंड जनरल। तो आज आप देखेंगे सारे D2C ब्रांड ओमनी पे बात करने लगे हैं, बिकॉज ऑनलाइन स्पेस बहुत सैचुरेटेड है। मेरे हिसाब से मात्र 1-1.5 करोड़ लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग, और वो 1-1.5 करोड़ लोगों के पीछे ही सब लोग लगे हुए हैं। उसी वजह से कॉस्ट बढ़ता है और वो सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सबको पता है कि सैचुरेशन है, ग्रो नहीं कर पा रहे। सर्वाइवल प्रॉब्लम है, एट द सेम टाइम जो रिपीट है वो वैसी नहीं रह गई। लोग पहले इन्वेस्ट कर रहे थे ये सोच के कि भाई हमने एक बार कस्टमर को एक्वायर कर लिया, ज्यादा पैसा देके तो लॉयल बन जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं। तो आपको कस्टमर को O2O एक्सपीरियंस देना पड़ेगा कि वो ऑनलाइन डिस्कवर करके ऑफलाइन बाय करे या फिर ऑफलाइन डिस्कवर करके उसको ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करे। जो लेंसकार्ट ने सबसे ब्यूटीफुल तरीके से किया। आई थिंक दे आर द पीपल हु आर फार साइटेड, और उन्होंने तरीके से उसको एग्जीक्यूट भी किया। काम और भी काफी लोग हैं। तो जो कस्टमर की नीड है वैसे बिजनेसेस और ब्रांड्स को ग्रो करना पड़ता है। तो ये मेरी चॉइस नहीं कि मुझे ओमनी चैनल जाना है, कस्टमर की नीड है कि हमें ओमनी चैनल जाना है। और दैट टू वेयर आई फील कि एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे नजर आता है जो मॉडर्न ट्रेड है उसके अंदर,
और उसी को मैं कुछ हद तक सॉल्व करने के लिए आई एम ट्राइंग टू क्रिएट सम यूनिक प्रोपोजिशंस दैट व्हाट इज द नेक्स्ट डिफरेंट वे जो बाकी सब लोगों ने नहीं किया होगा, उनमें से हमने ऐसा क्या कर लेंगे, क्योंकि रिटेल स्पेस तो वैसे ही बहुत महंगा है। वहाँ पे जाके एक नया बिजनेस, आज अगर Amazon पे सेल करना मुश्किल है तो रिटेल में सेल करना कौन सा आसान है। डिफिकल्ट तो सब जगह है, लेकिन कहाँ अपन लोग राइट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं। रिटेल के अंदर क्या ऐसी जगह है जिसको अभी तक सही ढंग से सोचा नहीं गया कि वहाँ पे ट्रैफिक तो आता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग कॉमर्स सेगमेंट में अपसेल कैसे कर सकते हैं। तो फॉर दैट ओनली अभी वी वर इन शार्क टैंक, तो नितेश के साथ में हम लोग का भी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का राउंड क्लोज हुआ है। तो सिंपल आइडिया है कि हम अपसेल क्या कर सकते हैं। जो भी जना एक होटल के अंदर आ रहा है, प्रीमियम होटल में आ रहा है, वहाँ पे सुवेनियर शॉप जैसे कॉन्सेप्ट को कैसे रिवाइव किया जा सकता है, क्योंकि लोग तो आ रहे हैं। So that is something which we are trying to do in terms of omnichannel rather than going into the traditional omnichannel method. We are trying to find the right strategic partners where we can position our products and where we can find the right upsell for both the businesses. Thank you. That was really helpful. Now I would like to request Mr. Samanth to explain us, how really online and offline channels are really working well for him. Because to me, from where I look upon is, if somebody is into fashion, footwear, lifestyle, omni-channel makes more sense, right, as compared to somebody who's into drugs and the other line of business. Okay, very interesting. But let me just give you a glimpse of it. Jaipur Rugs is a predominantly an offline retail business, right? People know about Jaipur Rugs, right? You guys know about Jaipur Rugs. The thing is, how we have actually cracked Jaipur Rug really well is by a unique product proposition, right? The quality of the product which Jaipur Rugs provide, we can say that nobody in India is actually doing it. The way the brand has been positioned around the product as a center is very unique in it, right? We are not leveraging anything, and we do not. As far as what I have understood by working with Jaipur Rugs, we are not playing the price game at all, right? Like Jaipur Rug is a luxury product, and that is why offline is very, very, very important for us, right? If somebody is investing, and we never say you buy a Jaipur Rug, you always invest into a Jaipur Rug, right? An investment is something which, and we always say that we give product with the value of our company. Our values in the company is that we never sell a product. We always give the blessing of our artisan to the customer, right? So हम लोगों ने क्या किया, हमने वो उस पूरे चैनल जो वैल्यू प्रोपोजिशन, जो प्राइस सेंसिटिविटी है, हम उससे ऊपर उठ गए हैं और हमने कहा कि हम एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कर रहे हैं जो कि एक यूनिक डिजाइन के साथ है। जो डिजाइन आपको जयपुर रग में मिलेगा वो कहीं मिलेगा ही नहीं। तो अब क्या है कि of retail we have been always doing on retail. Now from online, what we are trying is that how can we show this product to the masses also, right? How can we show everyone that this kind of unique product exists, and we want them to go to our stores, right? We want them to go to the stores and check the quality of the product, check the investment which they are getting into. Our rugs age are from 25 to 30 years. कोई प्रोडक्ट जो आपके घर के अंदर 25 से 30 साल रहने वाला है, आपके साथ ओल्ड होने वाला है, उसको जब तक आप उसको महसूस नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, it is very difficult to purchase online, right? We are also working on to how can we have a great conversion rate, by the way. So now the people who have gone to the offline stores have checked the value proposition. They can actually come to our online store and say that I know the quality which these guys give, right? This is the same, I think, the phenomena which goes for Apple, right? You know that you're buying an Apple, and that is how we say that you know that you're buying a Jaipur rug. You know that what kind of quality you are buying, right? And that is why my online conversion is a phenomenally great, right? So this entire omni-channel thing, but keeping product in focus, keeping the value. My value proposition is my product placement. My value proposition is my positioning in the market. We do not alter the the DNA of my brand with price sensitivity.
this is what we are placed for. And be it Louis Vuitton or be it any big brand, they all value Jaipur rugs. So it is a big thing. We just won a big carpet award in Germany, right? People acknowledge us. People acknowledge the craftsmanship of India. And best thing is people are ready to pay that price. Our international orders are soaring like anything, right? This is the first company which is growing like crazy right now, right? And so I think that is where only channel, right? Like offline, it is there, but online, I want many people to actually watch my product online and then go to my stores. We have stores in Mumbai, we have stores in Jaipur, we have stores in Gurgaon, we have stores in Hyderabad, all over the place. But once the person goes to my store, he comes back, he sees the product online and he buys it. The conversion rates are phenomenal. I don't have to do marketing, right? Like what we have been blessed with, my founders always say is ki do marketing just to show your product, not to sell your products, right? So we don't get into sell my product game. We only get into show my product game. The product will sell on its own. So how much masses we can reach is something which we all work on. That is commendable. How does it affect your audience? What is Jaipur's role in finding a channel presence across? So I think because you can check the product offline, you know the quality which you are getting into, right? Now you don't like the design of it. You can actually go to my online store and say कि मुझे इसी के अंदर इसी unique product के अंदर मुझे ये वाला design देना है. You don't have to worry about the quality now, right? हमारे पास जो problem statement है वो ये है कि and that is what I am trying to solve with Unicommerce and other platforms is how can I make a very strong supply chain so that I can send my products which you want to sell to the right store near you, right? To that, because I am not manufacturing them in bundles, right? I have only one product. You like the product, you are in Gurgaon, how I can solve that through a Unicommerce platform or something like that is what we are trying to solve. So it's my prerogative as in which way I want. Yes, it is absolutely yours. See, if you are convinced about the quality, which I am sure you are, but sometimes you say, okay, I like this quality, but I like these 3 designs now. I want to show these, can you show me these things? It is very difficult for me to uplift the 30 kilo carpet and send it to Gurgaon and still have unit economics in place. That is what we have to solve now, right? That is what we are now trying to solve. Basically, your struggle is at a different stage. It's at a different stage. Business would agree about this. So everybody is traveling in their own timeline, their own time, their own challenges. So, which is the best thing. What I really liked about sponsor is 2 quick things. One is broadly the challenges are people come down to an offline store just to feel, touch, check onto the quality. In apparel terms, check onto the fittings, check on the other aspects, and then maybe if there is some size mismatch, size non-availability, color not availability, texture issues, or maybe some other things which are missing in the store per se on that particular time, they simply go online and buy that stuff. The same thing has been replicated by Sir. If you want a customization, you have a dark grey wall, but you are liking this design, and you want a lighter shade of that truck, place an order, will get it done. So this is a kind of a problem which has been solved, and that has been replicated on this existing omni-channel approach, which is a really good thing. But in the changing world, in the changing dynamics, whereby every 3 years, 2 years down the line, people are changing the entire home designs, their interiors, their furniture, everything has been changing within 2 to 3 years, because change is one thing which is constant and people like to invest in a lifestyle living standards. Like gone are days when our parents used to have one sofa which lasted for 15 years. Nowadays, even my wife is changing the furniture every 3 years, 4 years. And there have been people who change this entire every year. So, rug, which is quite pricey, quite expensive, how you are going to cope up with those things, that is one. And still, if you are able to cope up with that, how you are ensuring that the customer is being loyal to your brand. 2 years down the line, he is again buying a product which will be laid at the same place with a new design
by paying that much of heavy cost? That is the bigger challenge which I wanted to understand how we has decode that matrix. So I think I have not decoded it. Jaipur Rug as a brand has already decoded it because it's been 50 years. But just to give you some answer with that question, when I was working in my previous companies, we were thinking about repeat rate, retention, and all those metrics, right? With Jaipur Rug brand positioning in place, when you first you see the product, these products are not mass marketed products. Right? When you buy a design, that design is unique to you, right? Like you may buy a rug which is being designed by, Shah Rukh Khan's wife, right? We have her with a brand altogether, right? You can buy rugs which are being designed by designers from Milan altogether, right? Or from like Gauri Khan, Milan, and all those big designers, right? These products do not go off the shelf like anything. They are always, because you will never find that replica in any other screen, right? You will always say that, like we have this rug which has been designed in Milan, right? This is an investment to you. And secondly, the consumer which we are working with, they have hotels, they have big bungalows, right? They don't have one home in which they operate, and they love to change this every 4 years. And now imagine, like similar to Apple, right? Like if they really want to buy another design from Gauri Khan, they know where to visit, they know the quality of the product. So that is where we started from, right? My core DNA of the brand lies in an awesome product which we create, not into anything. What we say is that you create a product which is not replicated. You cannot replicate my quality, you cannot replicate my, the blessings which we are giving from artisans. And it's an emotional connect, right? So everything changes when a brand is core positioned at a product level, right? We all know 4 P's: product, price, place, promotion. हमें सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करके जयपुर रग को बनाया है, राइट? हमने ना प्राइस को देखा है, हमने ना प्लेस को देखा है, ना प्रमोशन को देखा है। ये हमने हमारे कोर डीएनए में है कि एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट, एक ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ कि जब भी इंसान को एक जरूरत होगी कि मुझे एक और लेना है, तो वो चुपचाप यहीं आएगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो फिर ऑनलाइन जल्दी आएगा क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाकर स्टोर में जाएगा, और तब हमारा O2 जो सर्कल है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। Should you emphasize only on the Manchaha designs? That what? The initiating for 11 lakh rupees, but that's what? Yeah, so let me just give you a small glimpse. We don't want to take other panels' time, but Manchaha is an awesome thought by one of our founders. Manchaha is something, so when a rug is made, you always give a blueprint to a viewer कि मुझे ये बनाना है, ठीक है? Manchaha के अंदर हम कोई blueprint नहीं देते हैं, ठीक है? हम व्यूअर को बोलते हैं कि आपको जो पसंद है आप वो बनाइए। तो हर एक जो पूरा एंटायर कारपेट होता है वो एक स्टोरी होती है। वो जब बच्चा सुबह उठता है तो उसमें बच्चा बनता है, जब वो सुबह पानी लेने जाती है तो पानी बनता है, और वो कभी भी रेप्लिकेट नहीं होता, राइट? अब वो एक जर्नी है, वो एक इमोशन है, राइट? हमारा जो मनचाहा का कलेक्शन है वो इतना ज्यादा मार्केट के अंदर चाहा जाता है कि लोग, हम जब मनचाहा का एक अपना कारपेट बेचते हैं तो उसके साथ हम एक पोस्ट कार्ड भी बेचते हैं उस रूरल लेडी को कि आपका जो कारपेट आपने बनाया था वो यूएस के अंदर एक प्रिंसली स्टेट के अंदर एक बड़े से मैंशन के अंदर कैसा बिछा हुआ है। और हम क्या करते हैं, हम हमारे फाउंडर हमेशा कहते हैं कि जयपुर रग ही एक ऐसा ब्रांड है जो कि बिल्कुल एक ऐसे वी आर कनेक्टेड टू डिफरेंट सोसाइटीज, राइट? एक गांव के अंदर एक लेडी बैठ के हमारा कारपेट बना रही है, उससे सबसे ज्यादा जो लग्जरी प्रोडक्ट खरीदने वाला है उसको कोई ब्रांड इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। और एनकेसी सर की विजन और योगेश सर की जो विजन है वो है कि हम कैसे एम्पावरमेंट के थ्रू बिजनेस चला सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट के थ्रू। तो मनचाहा इज
like it's a diamond which we have somehow found, and I think kudos goes to the old people who have been in this brand to work. This is like a gem to my hand right now. I'm sure you can do great work. My next question goes to Nitin ji. Nitin ji, how about your experience? Because everything is quite evolving, right? And these days, people are looking for a physical kind of approach, which is physical plus digital. So I just wanted to have your thought process on leveraging multi-channel approach and maybe how or maybe what value you see coming in from that evolution which is happening with this physical and digital. मतलब फनल पे काम करने की बहुत जरूरत है क्योंकि जो रिपीट का फनल हम लोग अब तक मेजर करते आए हैं कमोडिटी बिजनेसेस के अंदर, तो इंडियन सारे बिजनेसेस सेम फनल को सेम तरीके से नहीं फॉलो कर सकते कि ऐसा होता है फिर वो रिपीट बाइंग होगा फिर 4 साल के अंदर आप वैल्यू रिकवर करेंगे, मतलब बहुत आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। तो अगर आज हम लोग बात करें वाई डिजिटल इज समथिंग वेयर वी कैन genuinely create the right product market fit for the people of this generation and who are also evolving very fast. तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आयुष ने बताया कि पर्सनलाइजेशन इज द की इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेगमेंट, और जैसा कि सर ने बताया कि रिपीट जो होता है वो एक बार किसी ने किसी भी फिजिकल स्पेस में किसी प्रोडक्ट को टच एंड फील कर लिया तो उनको एक ईज मिल जाती है और एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है कि डिजिटल स्पेस में दे कैन जस्ट डू अ बाय। तो मुझे लगता है कि हमारे केस के अंदर दिस इज आल्सो व्हाट वी वर्क विद। गिफ्टिंग के अंदर अगर हम बात करें तो रिपीट बहुत अलग तरीके से काम करता है। रिपीट कैन नॉट बी ऑफ द सेम प्रोडक्ट but repeat can be of the different occasion from the same company. That's how the repeat work in our case. So what we really want to do now कि अगर हम लोग किसी भी ऑफलाइन स्पेस के अंदर अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं तो there we want just level 1 to be done. That is the discovery of the product. अगर डिस्कवरी के अंदर एक्सेसिबिलिटी मिल रही है और लेवल 1 के अंदर अगर मे बी उसको फील कर रहा है, टच कर रहा है, बाय कर रहा है, तो लेवल 2 जिसके अंदर वो कुछ क्यूरेशन चाहता है, कस्टमाइजेशन चाहता है, that can only happen through omnichannel. अगर कस्टमाइजेशन रियल टाइम में विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट ऑफ टेक नहीं होगा तो मैनुअली वो वैसे भी पॉसिबल नहीं। तो अगर इफ एनीबॉडी वांट टू हैव एनी कस्टमाइजेशन डन और क्यूरेशन डन, तो फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ द सिंगल रेडी टू बाय प्रोडक्ट इन एनी ऑफलाइन स्पेस, दैट लेवल अप कैन बी डन ऑन द वेबसाइट वेयर यू कैन चार्ज प्रीमियम फॉर द कस्टमाइजेशन एंड क्यूरेशन। So that's how the need of gifting in terms of personalization plus omnichannel works for us. And I sincerely feel कि आज के टाइम के अंदर है ना जो बिजनेसेस या प्रोडक्ट बिजनेसेस है उनको इनोवेट बहुत ज्यादा फास्ट करने की जरूरत है। मतलब वो गॉन आर द टाइम्स वेयर वी कैन जस्ट थिंक कि एक प्रोडक्ट बनेगा जो लेगेसी ब्रांड बनता रहेगा। वो लेगेसी ब्रांड ऑलरेडी बन चुके हैं। पैराशूट के अंदर लोगों को दिमाग में नारियल तेल वही आता है, बहुत मुश्किल है उस मार्केट में जाके पेनिट्रेट करना। और गिफ्टिंग जैसा इंडस्ट्री है जिसके अंदर वैसे भी लोगों को नए नए ऑप्शन बहुत फास्ट ही होते हैं, तो जब तक आप डिजिटल फर्स्ट नहीं होंगे तब तक आप वैरायटी बहुत फास्ट नहीं लेकर। So to bring variety very fast, it is needed that you need to make sure that in lowest investment where you can display your products and how fast you can create products, because जो customer है वो तो pay करने के लिए तैयार है। Thank you. It was really insightful. Quick question to Nakul ji. Nakul ji, when it is coming down to nutrition, right? That is not going to change your body overnight. That is an ongoing process. It takes some time, right? ऐसा नहीं है कि कल कोई आपने जूस पिया एलोवेरा का और परसों से आप सुपरमैन बन गए, छत से कूद रहे, कुछ भी हो गया, वो नहीं होने वाला। That take time, right? And then everybody is in a rush, right? Everybody wants instant thing, like Maggi, 2 minutes में बनने खा लिया फिर बन गया, right? The instant impact वो आता नहीं है। But the point is कि it is very important to hold back your customer. Unless and until you are not able to hold back your customer for long, जहाँ पे वो कंटिन्यूटी की तरह आपकी मेडिसिन या प्रोडक्ट्स यूज करे और उसके बाद उसको इम्पैक्ट पड़े, बट इतना कंटिन्यूटी के साथ वो पेशेंस के साथ रेगुलर यूज नहीं करेगा, he has got other products also to evaluate, right? उतना टाइम नहीं। How you are able to hold your customer being loyal, and specifically do you think that technology is going to play a vital role in holding that loyalty? तो हमारी जो कैटेगरी है उसमें हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी कंसिस्टेंसी और प्रोडक्ट की जो पर्पस गिवन प्रोडक्ट उसी के बेस पे रिपीट पाए। सपोज कोई डायबिटीज का पेशेंट है, हम कहते हैं कि आप उसकी यूज करना चाहिए, डायबिटीज का टेस्ट करें, लीवर का टेस्ट करें, आप साथ में यूज करके देखते हैं कौन से आप दोबारा टेस्ट करें। तो इस तरीके से हमने एक एक प्रोडक्ट पे लास्ट
ingredients है मैंने उसके ingredients है अपन देखेंगे कि डायबिटीज की आप बहुत सारे मेडिसिन इम्प्रूव होने वाले किसी ने किसी भी शहर पे अपन ने मोमोटी का इतना नहीं देखा मोमोटी का कहते हैं करेले के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि डायबिटीज की जितनी भी मेडिसिन होता है वो हमने ऐसे इंग्रेडिएंट हमारे उसके काम में जो करके और हमारे तो जो टेक्नोलॉजी वाइज इसके अंदर हमने कंसिस्टेंसी रखी कंसिस्टेंसी जब प्रोडक्ट क्वालिटी जब सप्लाई चेन को लेकर जो भी एजुकेशन के सिस्टम में कंसिस्टेंसी कम्युनिकेशन जो चीज हम हमारे फिजिकल स्टोर पे बोलते हैं वही चीज हमारे सोशल मीडिया पूरे omni channel में एक ही चीज का जो हमारी यूएसपी हमारे खुद के काम है उसी तरीके से तो टेक्नोलॉजी वाइज में हमने बहुत सारी चीजें ओपन की है हमारे इधर शॉपिफाई की वेबसाइट ऑनलाइन के स्वाइप Thank you, sir. Last question. Mr. Ayushi, as a gifting item for home decor and kitchen purposes, have exceeded the expectations of the consumers in the past. Right? How you are taking the advantage of the rising consumer demand across channels? So sir, the answer is omni-channel. As I said, omni-channel से क्या होता है? By tracking all the interactions across all platforms, whether online or offline, you are able to understand your customer better. And if you are able to understand your customer better, you are able to serve your customer better. I think ये एक बहुत important चीज़ है जो brands ने figure out कर ली है. जैसे समर भाई ने बोला ना, जयपुरक्स के केस में टच एंड फील एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली एलिमेंट्री में टच एंड फील बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारी मेजर कैटेगरीज क्या है? प्लेट्स, बोल्स, क्लॉशेस, क्रॉकरी, कटलरी. एंड मेरा टीजी क्या है? विमेन एज बिटवीन 35 to 55. मतलब अगर मुझे सरल भाषा में बोलना है, पीपल लाइक माय मासी, माय मामिसा, माय नानिसा. उन लोग को अभी भी ऐसा होता है कि यार हमें प्रोडक्ट फील करके देखना है कि उसका टेक्सचर कैसा है, क्या हमारी होम हेल्प उसको तोड़ तो नहीं देंगे साफ करते टाइम. तो ओमनी चैनल का रोल कहाँ पे आता है? एक बार उन्होंने प्रोडक्ट को टच एंड फील कर लिया, उसका क्वालिटी देख लिया कि रफ एजेस हैं, स्मूथ एजेस हैं, देन दे गेट कन्विंस्ड. देन फिर वो ऑनलाइन आके परचेज कर लेती हैं. आप उनको एफर्ट नहीं देना कि स्टोर तक में जाके वापस इस प्रोडक्ट को देखो ना देखो. So now that she has become confident, she'll come online and she'll buy it. So I feel omni-channel is the answer. Second point जो मुझे बोलना है ना, of course, brand loyalty बहुत बढ़ती है. When you're providing a seamless, smooth experience across all channels, अगर आप हर product same जगह दिख रहा है, store पे भी दिख रहा है, market places भी दिख रहा है, D2C website पे दिख रहा है, brand loyalty बढ़ जाती है. And we have got multiple case studies on it कि कैसे ये चीज overgrow कर रहा है काफी brands को. Third, omni channel का जो सबसे important reason है वो है speedy delivery. I feel omni channel helps you to satisfy your customer in the shortest time via the shortest route. अगर गुड़गांव से मेरे पास ऑर्डर आया है तो मुझे जरूरी नहीं है मैं मेरे जयपुर के वेयरहाउस से सेंड करूंगा, मैं मेरे गुड़गांव स्टोर से भी भेज सकता हूँ. सिमिलरली हैदराबाद में ऑर्डर प्लेस हुआ है, आई विल डिस्पैच इट फ्रॉम माय हैदराबाद स्टोर इटसेल्फ. सो आई थिंक ऐसे मल्टीपल चीजें हैं जो ओमनी चैनल में काफी ज्यादा गेम चेंजर है फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, स्पेशली माय ब्रांड, बिकॉज अ लॉट ऑफ टच एंड फील एस्पेक्ट कम्स इनटू इट. So मैं बस ये बोलना चाहूँगा, these are some of the benefits जिनसे हमें बहुत फायदा हो रहा है ओमनी चैनल. Thank you. I would like to thank all our speakers, esteemed panelists, for sharing their thoughts and insights. But certainly would like to add few pointers from my side which I have accumulated so far. Not too sure how it is going to help you guys, but let me still point out a few pointers. One is, for any brand to grow, you just need to focus on ECG, right? Because doctor also checks your ECG whether your heart is functioning well or not. So focusing on ECG, which is
that is, sir talked about the unit economy, right? It should function well, right? You need to keep a tab on the unit economies. One. Second is, you need to focus upon your customer experience. How premium or how rich experience you are giving to that customer. How focused approach you are giving to customer. How customized approach or personalized feel you are giving to that customer. That will be well. And apart from the needs of the customer, building a partner, reduce your CAC, or reduce the CAC, having a better NPS, net promoter score, and even all these parameters will flop if the customer gives a score. Once a customer has been flopped into your score, right about your product and offerings, then he has this width and battery. Already he has his own wish from where he can purchase. He sees that ledger, he does not want to move out, right? It's too much reason he can buy online. But if there's trust, if there's confidence, if he knows the value, he will be getting it. And thirdly, that is one. Second is also the flip side is also like if he does not want to ensure he are going offline, is going to be a tedious job, then he has means of purchasing it online, and then does not things are not fitting it well, he also go and return it offline. So that kind of experience, why from one source return to another source, why from another source return to a different source, or maybe talking about exploring the store, dark store, mini store, franchising, every channel is very important. People think anything channel, your channel is equally important. Grow your business up. So this is my point of view. However, 3 days I as the parameter skip down any machinery to function. That is why you need engine oil to run your car, you need engine oil to run your bike or something, right? So again, the same government multi-channel. The difference which matters is one is your operating, whether it's operating margins, whether it is the operational efficiency, or talking about the customer experience. That is one. Second is the inventory, what you hold, how best optimized you can make the inventory you hold on. And the third is logistics, which is making the product available at the cheapest cost, and in just no time the consumer will define your growth report. So this is the kind of approach I think we should take and omnichannel to be successful. With this, I would like to conclude this panel. Thank you, ma'am. I would like to request you all to please be there for a quick presentation. Thank you for joining. हम उसके ऊपर उठते हैं और हमने कहा कि हम एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कर रहे हैं जो कि एक यूनिक डिजाइन के साथ है। जो डिजाइन आपको जयपुर में मिलेगा वो कहीं मिलेगा ही नहीं। तो अब क्या है कि हम ऑफ रिटेल we have been always been on retail. Now from online, what we are trying is that how can we show this product to the masses also, right? How can we show everyone that this kind of unique product exists, and we want them to go to our stores, right? We want them to go to the store and check the quality of the product, check the investment which they are getting into. Our runs ages age are from 25 to 30 years. कोई product जो आपके घर के अंदर 25 से 30 साल रहने वाला है, आपके साथ old होने वाला है, उसको जब तक आप उसको महसूस नहीं करेंगे, check नहीं करेंगे, it is very difficult to purchase online, right? We are also working on how can we have a great conversion rate by the way. So now people who have gone to the offline store and checked the value proposition, they can actually come to our online store and say that I know the quality which is there, right? This is the same, I think the phenomenon which we use for Apple, right? You know that you're buying an Apple, and that is how we say that you know that you're buying a Jaguar. You know that what kind of quality you are buying, right? And that is why my online conversion is a phenomenally big, right? So this entire omni-channel thing, but keeping product in focus, keeping the value. My value proposition is my product placement. My value proposition is my positioning in the market. We do not alter the the DNA of my brand with price sensitivity. This is what we are placed on. Be it Louis Vuitton or be it any big brand, they all value their product. It is a big thing. We just want a big topic about in Germany, right? People acknowledge us. People acknowledge the craftsmanship
best thing is people are ready to pay that price. Our international orders are swimming like anything, right? This is the first company which is growing like crazy right now, right? And so I think that is where the only challenge, right? Like, offline, it is there, but online, I want many people to actually watch my product online and then go to my store. We have stores in Mumbai, we have stores in Jaipur, we have stores in Gurgaon, we have stores in Hyderabad, all over the place. But once the person goes to my store, he comes back, he sees the product online and he buys it. The conversion rates are phenomenal. I don't have to do marketing, right? Like what we have been blessed with what my founders always say is do marketing just to show your product, not to sell your products, right? So we don't get into sell my product here. We only get into show my product here. The product will sell on its own. So how much masses we can reach is something which we follow. That is commendable. So I think because you can check the product offline, you know the quality which you are getting into, right? Now you don't like the design of it. You can actually go to my online store and say कि किसी के अंदर किसी भी product के अंदर में ये वाला design है. You don't have to worry about the quality, right? हमारी तरफ जो problem statement है वो ये है कि and that is what I am trying to solve with Unicommerce and other platforms is how can I make a very strong supply chain so that I can send my products which you want to sell to the right store near you, right? To that, because I am not manufacturing them in bundle, right? I have only one product. You like the product, you are in Gurgaon, how I can solve that through a Unicommerce platform or something like that is what we are trying to solve. Yes, it is absolutely yours. If you are convinced about the quality, which I am sure you are, but sometimes you think, okay, I like this quality, but I like these three designs now. I want to show these. Can you show me these things? It is very difficult for me to uplift a 30 kilo carpet and send it to Gurgaon and still have a little comments in place. That is what we have to solve now. Like that is what we are now trying to solve. So everybody is traveling with their own timeline, their own time, their own challenge. So which is the best thing what I really liked about from two things. One is the project challenges are people come down to an offline store just to feel, touch, check on the quality, in apparel terms, check on the fittings, check on the other aspects, and then maybe if there is some size not availability, color not availability, texture issues not availability, some other things which are missing in the store because on that particular time they simply go online and buy that stuff. The same thing has been replicated by sir. If you want a customization, you have a dark grey wall but you are liking the design and you want a lighter shade of that dark, place an order and you get it. So this is the kind of a problem which we solve and that has been replicated from this existing only channel approach, which is really good. But in the changing world, in the changing dynamics, every 3 years, 2 years down the line, people are changing the entire home designs, their interiors, their furniture, everything has been changing within 2 to 3 years. Because again, this is one thing which is constant. People like to invest in a lifestyle living standards. Like gone are days when our parents used to have one sofa which lasted for 15 years. Nowadays, even my wife is changing the furniture every 3 years to 4 years, and there have been people who change this entire every year. So, that which is quite pricey, quite expensive. How you are going to cope up with those things, that is one. And still, if you are able to cope up with that, how you are ensuring that the customer is being loyal to your brand? 2 years down the line, he is again buying a product which will be laid at the same place with a new design by paying that much of heavy cost. That is the bigger challenge which I wanted to understand how he has decoded that matrix. I think I have not decoded it. Jaipur Rug as a brand has already decoded it because it's been 50 years. But just to give
I was working in my previous companies, we were thinking about repeat rate, retention, and all those metrics, right? With Jaipur brand positioning is when you first you see the product, these products are not mass marketed products, right? When you buy a design, that design is unique to you, right? Like you may buy a rug which is being designed by Shah Rukh Khan's wife, right? We have her with a brand particular, right? You can buy rugs which are being designed by designers from Milan particular, right? Or like Gauri Khan, Milan, and all those big designers, right? These products do not go off the shelf like anything. They are always because you will never find that replica in any other street, right? You will always say that like we have this rug which has been designed in Milan, right? This is an investment. And secondly, the consumer which we are working with, they have hotels, they have big bungalows, right? They don't have one room in which they operate, and they love to change this every 4 years. And now imagine, like similar to Apple, right? Like if they really want to buy another design from Gauri Khan, they know where to visit, they know the quality of the product. So that is where we started from, right? My core DNA of the brand lies in an awesome product, not into anything. What we say is that create a product which is not replicable. You cannot replicate my quality, you cannot replicate my the blessings which we are giving from artisans, and it's an emotional connect, right? So everything changes when a brand is over positioned at a product level, right? We all know 4 P's: product, price, place, promotion. हमें सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करके जयपुर रखना है, राइट? हमने ना प्राइस को देखा है, हमने ना प्लेस को देखा है, ना प्रमोशन को देखा है। ये हमने हमारे कोर डीएनए में एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट, एक ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ कि जब भी इंसान को एक जरूरत है कि मुझे एक और लेना है, वो चुपचाप लेने आएगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, और वो फिर ऑनलाइन जल्दी आएगा क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाकर स्टोर में जाएगा, और तब हमारा जो सर्कल है वो एकदम कंप्लीट है। Yeah, so let me just give you a small tips. You don't want to take other panels time, but Manchaha is an awesome thought by one of our founders. Manchaha is something. So when a rug is made, you always give a blueprint to a कि मुझे ये बनाना है, ठीक है? Manchaha के अंदर हम पूरी blueprint लिख देते हैं, ठीक है? हम व्यूअर को बोलते हैं कि आपको जो पसंद है, आप वो बनाइए। तो हर एक जो पूरा इंटायर कारपेट होता है वो एक स्टोरी होती है। वो जब बच्चा सुबह उठता है तो उसमें बच्चा बनता है, जब वो सुबह पानी लेने जाती है तो वो पानी बनता है, और वो कभी भी रेप्लिकेट नहीं होता, राइट? अब वो एक जर्नी है, वो एक इमोशन है, राइट? हमारा जो Manchaha का कलेक्शन है वो इतना ज्यादा मार्केट के अंदर चाहा जाता है कि लोग, हम जब Manchaha का एक अपना कारपेट बेचते हैं तो उसके साथ हम एक पोस्ट कार्ड भी बेचते हैं उस रूरल लेडी को कि आपका जो कारपेट आपने बनाया था वो यूएस के अंदर एक प्रिंसली स्टेट के अंदर एक बड़े से मैंशन के अंदर कैसा बिछा हुआ है। और हम क्या करते हैं, हम हमारे फाउंडर हमेशा कहते हैं कि जयपुर रग एक ऐसा ब्रांड है जो कि बिल्कुल एक ऐसे we are connected to different societies, right? एक गांव के अंदर एक लेडी बैठ के हमारा कारपेट बना रही है, उससे सबसे ज्यादा जो लग्जरी प्रोडक्ट खरीदने वाला है उसको कोई ब्रांड इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। और एनपीसी सर की विजन और योगेश सर की जो विजन है वो है कि हम कैसे एम्पावरमेंट के थ्रू बिजनेस चला सकते हैं, कैसे। तो Manchaha is a like it's a diamond which we have somehow found, and I think kudos to the old people who have been in this brand to work. This is like a gem to my hand, right? My next question goes to Nitin. Nitin, how much of experience, because everything is quite evolving, right? And these days,
plus digital. So I just wanted to have your thought process on leveraging multi-channel approach and maybe how or maybe what value you see coming in from that evolution which is happening in this physical and digital. मतलब फनल पे काम करने की बहुत जरूरत है क्योंकि जो रिपीट का फनल हम लोग अब तक मेजर करते आए हैं कमोडिटी बिजनेसेस में इंटरनेट सारे बिजनेसेस सेम फनल को सेम तरीके से नहीं फॉलो कर सकते कि ऐसा होता है कि रिपीट बाइंग होगा 4 साल के अंदर आप वैल्यू रिकवर करेंगे मतलब बहुत आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। तो अगर आज हम लोग बात करें वाई डिजिटल इज समथिंग वेयर यू कैन genuinely create the right product market fit for the people of this generation and who are also evolving very fast। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आयुष ने बताया कि पर्सनलाइजेशन इज इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेगमेंट और जैसा कि सर ने बताया कि रिपीट जो होता है वो एक बार किसी ने किसी भी फिजिकल स्पेस में किसी प्रोडक्ट को टच एंड फील कर लिया तो उनको एक ईज मिल जाती है और एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है फिजिकल स्पेस में वी कैन जस्ट डू अ बाय। तो मुझे लगता है कि हमारे केस के अंदर दिस इज आल्सो व्हाट वी गो थ्रू कि गिफ्टिंग के अंदर अगर बात करें तो रिपीट बहुत अलग तरीके से काम करता है। रिपीट कैन नॉट बी ऑफ द सेम प्रोडक्ट but repeat can be of the different occasion from the same product. That's how the repeat works in our case. So what we really want to do now is अगर हम लोग किसी भी ऑफलाइन स्पेस के अंदर अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं there we want just level 1 to be done, that is the discovery of the product। अगर डिस्कवरी के अंदर एक्सेसिबिलिटी मिल रही है और लेवल 1 के अंदर अगर उसको फील कर रहा है टच कर रहा है बाय कर रहा है तो लेवल 2 इसके अंदर वो कुछ क्यूरेशन चाहता है कस्टमाइजेशन चाहता है that can only happen to only अगर कस्टमाइजेशन रियल टाइम में विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट ऑफ टेक नहीं होगा तो मैनुअली वो वैसे भी पॉसिबल। तो अगर इफ एनीबॉडी वांट टू हैव एनी कस्टमाइजेशन देन और क्यूरेशन डन तो फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ द सिंगल रेडी टू बाय प्रोडक्ट इन एनी ऑफलाइन स्पेस दैट लेवल अप कैन बी डन ऑन द वेबसाइट वेयर यू कैन चार्ज प्रीमियम फॉर द कस्टमाइजेशन। So that's how the need of gifting in terms of personalization plus multi-channel works for us। And I sincerely think कि आज के टाइम के अंदर ना जो बिजनेसेस या प्रोडक्ट बिजनेसेस उनको इनोवेट बहुत ज़्यादा फास्ट करने की जरूरत है। मतलब वो गॉन आर द टाइम वेयर वी कैन थिंक एक प्रोडक्ट बनेगा जो लेगेसी ब्रांड बन जाएगा। तो लेगेसी ब्रांड ऑलरेडी बन चुकी है। पैराशूट के अंदर लोगों को दिमाग में आ रहे थे वही आता है बहुत मुश्किल है मार्केट में जाकर क्रिएट करना। और गिफ्टिंग जैसा इंडस्ट्री है जिसके अंदर वैसे भी लोगों को नए ऑप्शन बहुत फास्ट चाहिए होते हैं। तो जब तक आप डिजिटल फर्स्ट नहीं होंगे तब तक आप वैरायटी बहुत फास्ट नहीं लेकर to bring variety very fast, it is needed that you need to make sure that you lowest investment where you can display your products and how fast you can create products because to customer and to take advantage of it। Thank you. Very insightful. My question to Navali. Navali, when it is coming down to nutrition, right? That is not going to change your body overnight. That is an ongoing process. It takes some time, right? ऐसा नहीं है कि कल कोई आपने सुपरमैन बन गया चल से कुछ डायरेक्ट वो नहीं होता that take time, right? And then everybody is in a rush, right? Everybody wants instant things like Maggi noodles or something like that, right? The instant impact वो आता नहीं। But the point is कि it is very important to hold back your customer unless and until you are not able to hold back your customer for long। जहाँ पे वो continuity की तरह आपकी medicines या products use करे और उसके बाद उसको impact पड़े। पर इतना continuity के साथ वो patients के साथ regular use नहीं करेगा, he has got other products also to evaluate, right? इतना time नहीं। How you are able to hold your customer being loyal and specifically do you think that technology is going to play a vital role in holding that loyalty? हमारी strategy है कि हर product quality का
Thank you, sir. Right. As a gifting item for home decor, have exceeded the expectations of the consumer so far. Right? How do you take the advantage of providing consumer demands across channels? So sir, the answer is omni-channel, as I said. Omni-channel से क्या होता है? By tracking all the interactions across all platforms, whether online or offline, you are able to understand your customer better. And if you are able to understand your customer better, you are able to serve your customer better. I think ये एक बहुत important चीज़ है जो brands ने figure out कर ली है. जैसे समर भाई ने बोला ना, जयपुर रॉक्स के केस में टच एंड फील एस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है. सिमिलरली एलिमेंट्री में टच एंड फील बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारी मेजर कैटेगरीज क्या है? प्लेट्स, बोल्स, क्लॉशेस, क्रॉकरी, कटलरी. एंड मेरा टीजी क्या है? विमेन एज बिटवीन 35 to 55. मतलब अगर मुझे सरल भाषा में बोलना है, पीपल लाइक माय मासी, माय मामिसा, माय नानिसा. उन लोग को अभी भी ऐसा होता है कि यार हमें प्रोडक्ट फील करके देखना है कि उसका टेक्सचर कैसा है, क्या हमारी होम हेल्प उसको तोड़ तो नहीं देंगे साफ कर देते हैं. तो ओमनी चैनल का रोल कहाँ पे आता है? एक बार उन्होंने प्रोडक्ट को टच एंड फील कर लिया, उसका क्वालिटी देख लिया कि रफ एजेस है, स्मूथ एजेस है, देन दे गेट कन्विंस्ड. देन फिर वो ऑनलाइन आके परचेज कर लेंगे. आप उनको एफर्ट नहीं देना कि स्टोर तक में जाके वापस इस प्रोडक्ट को देखो ना देखो. So now that she has become confident, she'll come online and she'll buy it. So I feel omni-channel is the answer. Second point जो मुझे बोलना है ना, of course, brand loyalty बहुत बढ़ती है when you're providing a seamless, smooth experience across all channels. अगर आप हर product same जगह दिख रहा है, store पे भी दिख रहा है, marketplaces पे दिख रहा है, D2C website पे दिख रहा है, brand loyalty बढ़ जाती है. And we have got multiple case studies on it कि कैसे ये चीज overgrow कर रहा है काफी brands को. Third, omni channel का जो सबसे important reason है वो है speedy delivery. I feel omni channel helps you to satisfy your customer in the shortest time via the shortest route. अगर गुड़गांव से मेरे पास ऑर्डर आया है तो मुझे जरूरी नहीं है मैं मेरे जयपुर के वेयरहाउस से सेंड करूंगा, मैं मेरे गुड़गांव स्टोर से भी भेज सकता हूँ. सिमिलरली हैदराबाद में ऑर्डर प्लेस हुआ है, आई विल डिस्पैच इट फ्रॉम माय हैदराबाद स्टोर इटसेल्फ. सो आई थिंक ऐसे मल्टीपल चीजें हैं जो ओमनी चैनल में काफी ज्यादा गेम चेंजर है फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, स्पेशली माय ब्रांड बिकॉज अ लॉट ऑफ टच एंड फील एस्पेक्ट कम्स इनटू इट. So मैं बस ये बोलना चाहूँगा, these are the some of the benefits जिनसे हमें बहुत फायदा हो रहा है ओमनी चैनल. Thank you. I would like to thank all our speakers, speaking panelists, also sharing their thoughts and insights. I certainly would like to add few pointers from my side which I have accumulated so far. Not too sure how it is going to help you guys, but let me still, point out a few pointers. One is for any brand to grow, you need to focus on ECG, right? Because doctor also checks you whether you are or not. So focusing on ECG, that is sir talked about the unit economics, right? Right? You need to keep a tab on the unit economics. One. Second is you need to focus upon your customer experience. How premium or how rich experience you are giving to that customer. How focused approach you are giving to the customer. How customized approach or personalized feel you are giving to that customer. That will lead well. And last but not the least is customer loyalty. Building upon customer loyalty will reduce your CAC. Not only just reduce your CAC, you are having a better NPS, which is a net promoter score. Everything, all these parameters will flop in with
customers to your store. Once a customer has been stopped into your store, liked about your product and offerings, then he has his wills and fancies, or maybe he has his own wish from where he can purchase. If he is at leisure and does not want to move out, right, in the stretching sun, he can buy online. But if there's trust, if there's confidence, if we know the value which we'll be getting it, and thirdly, that is one. Second is also the flip side is also like if he does not want to ensure he are going offline is going to be a tedious job, then he has the need of purchasing it online, and then if things are not fitting it well, he or she go and return it offline. So that is kind of an experience. Buy from one source, return to another source. Buy from another source, return to a different source. Maybe talking about exploring the stores, dark stores, mini stores, franchising. Every channel is very important, and leveraging every channel, channel is grow your business up. So this is my point of view. However, three things which I think as a key parameter to fuel up any machinery to function. That is oil. You need engine oil to run your car. You need engine oil to run your bike or something, right? So here in this e-commerce industry or multi-channel approach, three things which matters is one is your operating, whether it is operating margins, whether it is increasing your operational efficiency, or talking about the customer experience. That is one. Second is the inventory, what you hold, how best optimized you can make the inventory you hold off. And the third is logistics, which is making the product available at cheapest cost and in just no time to the consumer will define your growth way forward. So this is the kind of approach I think we should take, and only challenge the key to success. With this, I would like to conclude this panel. Thank you, ma'am. I would like to request you all to please be there for a quick moment of presentation. Thank you for joining. We finish today. I want to say a big thank you to our speakers. एक बार हमारे speakers के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. And see, हमारे delegates के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Thank you so much everyone for being with us. और एक बार Unicommerce के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. Come on everyone, to providing to us such an amazing platform. Thank you so much everyone being part of this fantastic day. We are extremely delighted that you all are here to celebrate this grand day. Thank you so much everyone. I Lucky Dara. Before I'm going to signing off this day, I request you sir please present the mementos. जितने भी हमारे स्पीकर्स हैं और जितने भी डेलीगेट्स यहाँ पे हैं सभी को मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि हाईली अरेंज्ड है सेम बैंक्वेट में जिसे भी टी कॉफी लेनी है प्लीज यू कैन हैव टी एंड कॉफी. Audience, I Lucky Dara.